અને રાજ્યોમાં ગાત્રો થીજવતી ઠંડીની આગાહી કરવામાં આવી છે। નલિયામાં સૌથી ઓછું 7.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, તો રાજકોટમાં કોલ્ડ વેવનું યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું। એની રાજકોટમાં કાતિલ ઠંડીનો અનુભવ થશે। રાજકોટમાં તાપમાન અત્યારે 9.1 ડિગ્રી નોંધાયું છે, જ્યારે ડીસામાં 10.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। અમદાવાદમાં તાપમાન 13 થી 14 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે અને હજુ પણ રાજ્યમાં 2 દિવસ ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે। पवन की गति 5 થી 10 किलोमीटर की आसपास रहने की संभावना है। कल अगले 7 दिन का जो वेदर फोरकास्ट है, आज के मौसम शुष्क रहेगा और जो पवन का दिशा अभी है उत्तर पूर्व से पूर्व है और जो लघुत्तम तापमान अहमदाबाद में रिकॉर्ड हुआ है वो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड और जो गांधीनगर में रिकॉर्ड हुआ है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड और सारे गुजरात रीजन में जो टेम्परेचर लघुत्तम रिकॉर्ड हुआ है 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड नालिया में। राजकोट में कल कोल्ड वेव ऑब्जर्व हुआ है और जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात सारे दोनों मेड सब डिवीजन के लिए नो लार्ज चेंज में दिया गया है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट है या कोल्ड वेव येलो वार्निंग के साथ कोल्ड वेव का वार्निंग दिया गया है।